Hello everyone, good afternoon. I hope you are fine. And today we are doing better some question related to our oscillation unit of the 11th class projects there. Last 10 unit is going on of the oscillation and wave. Okay, so we discussed already in the last class displacement, velocity, their acceleration, and how you can find their energy, total energy, sum of the kinetic and potential energy. So today we will discuss some question related with these topics. Your first one question: a particle execute simple harmonic motion with a time period of a 2 second, then amplitude is 5 meter, then find the displacement, velocity and acceleration after the 1/3 second starting from the mean position. ओके ये कह रहा है इफ ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अलोंग द मीन पोजीशन, कि अगर हमने क्या है कि एक पार्टिकल हैंग कर रखा, लेट वी आर टेकिंग अ पेंडुलम स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये इसकी क्या मीन पोजीशन है आपकी that equilibrium position, mean position, starting from here and moving in this direction, then it will reach their extreme position, then coming back in this direction, then reach here extreme position. So here we have to find out time period. आपके क्वेश्चन में क्या given है? टाइम पीरियड given है 2 second. After that given is amplitude. Amplitude is 5 meter is given. Then find their displacement, velocity and acceleration after the t equal to here 1/3 second. So first we should know about their displacement equation, how we can find their velocity, how we can find their acceleration. So हमने discuss किया था last class में बेटा displacement, how we can write their equation of the displacement in case of the simple harmonic motion. Displacement in SHM we can write there y equal to a sine omega t. This one we can write their equation of the displacement. So a is amplitude, sine is your type of wave. In our question is not given that sine and cosine wave, we have to find out displacement only. Omega also not given, but time period is given. So first we can find their omega we can find there by using, as we know omega we can write there 2 pi by time period. This is the relation between omega and time period. So by using this one factor, your time period is given 2 second, then omega will be there, omega equal to 2 pi by your time period. Time period आपको 2 given है, so 2 से 2 cancel out, then here left your pi, radian per second. This is the unit of the omega. Then t is time is already given, so displacement we can write there y equal to a is our amplitude given आपके क्वेश्चन में, amplitude is 5 meter, time is 1/3 and omega क्या है आपके पास pi. So amplitude is 5 second, 5 meter, then sine omega t, then 5 sine omega we can write there pi. हमने सोल्व किया अभी ओमेगा को क्या है pi, और time is equal to here 1/3. So here y we can write there 5 sine pi by 3. This is our displacement in our meter. If amplitude is given in meter, then we can write it meter only. So this one our displacement equation. So further on we can solve it sine pi by 3. Okay, sine pi by 3, then it will be sine 60. So sine 60 we can write there y equal to here 5 into under root 3 by 2. 5 by 2 under root 3, this one our displacement. So after that we have to find out velocity. अब हमें क्या है velocity find करनी है. Velocity how we can find there? First we will write their velocity formula, velocity equation a omega cos omega t. By using differentiation of the displacement, then we will get their velocity. Displacement का differentiation करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? Velocity मिलेगी. So here we can write there v equal to a is equal to in our question there 5 meter, omega is pi, then cos omega pi and time is equal to 1/3. ओके, अभी हमने सभी फैक्टर सोल्व किए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 pi cos pi by 3. Okay, and cos pi by 3 or cos 60 only, and cos 60 we can write there 1/2. That is equal to 1/2. Then it will be here 5/2 pi meter per second. This one our velocity.
नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. हियर ओनली वी आर फाइंडिंग एक्सेलरेशन. क्या आएगी हमारे पास? माइनस. इसका बेटा वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी? एक्सेलरेशन मिलेगी. तो एक्सेलरेशन क्या आएगी हमारे पास? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. Clear? Differentiate this one. A omega sin omega t, then here omega only. Sin omega t को हम क्या लिख सकते हैं? Y by a. So y by a to a cancel out, then here left minus omega square y. Okay. After that we can write there a equal to here minus omega is equal to here. Omega क्या given हमारे क्वेश्चन में? Omega equal to here pi only, then your 5 amplitude we are taking there 5 meter beta, then on this one only we will find their acceleration. Okay, then for the maximum acceleration we can find there on this one, then here we can write there omega square here y equal to displacement क्या है हमारे पास? This one, then here we can write there 5 by 2 under root 3, then here we can write there minus omega pi square 5 by 2 under root 3. This one we can write there 5 by 2 under root 3 pi square. This one will become our acceleration. Okay. So if you want to find out maximum acceleration, so for the maximum acceleration, then we can write there minus omega square a. Okay, y becomes your a for the maximum displacement. Maximum displacement में y क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा. इक्वल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी हमारी? माइनस ओमेगा स्क्वायर y. तो हमारे क्वेश्चन में बेटा कुछ भी गिवन नहीं था कि मैक्सिमम फाइंड करनी है. आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. सो ऑन दिस वन डिस्प्लेसमेंट वी विल फाइंड देयर एक्सेलरेशन. तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड की, तो इसके ऊपर कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, तो वो हमने पुट करके हमने फाइंड कर लिया. So now next one, a body is weighing 10 kg is executing SHM velocity of the 6 meter per second. After 1 second starting from the mean position, time period becomes here 1/6. Find its kinetic potential and the total energy. Clear? तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हमारे पास? क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ दिस बॉडी आवर 10 kg. मास क्या क्या गिवन है? 10 kg. ओके, फर्स्ट वी आर राइटिंग देयर टर्म्स. बेटा आपको क्या क्या फाइंड करनी? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी. सो वी नो अबाउट दिस वन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a square minus y square. Okay, this one our kinetic energy. Then potential energy, we know about this one potential energy 1/2 m omega square y square. And total energy will be equal to total energy sum of kinetic plus your potential. And total energy total हमारे पास क्या आती है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. या तो हम ये फाइंड करें कि इनमें से एक एनर्जी फाइंड करें, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, अपने पास क्या आ जाएगी? दूसरी वाली एनर्जी आ जाएगी. ओके, या फिर हम दोनों को सेपरेट फाइंड करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी आएगी. फर्स्ट वी आर राइटिंग विच फैक्टर्स आर गिवन इन आवर क्वेश्चन. सो हैज अ वेलोसिटी v इक्वल टू गिवन आवर 6 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड. देन आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन, देन t इक्वल टू गिवन 1 सेकेंड. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन से अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है, then at the 1 second, then if it's time period means time taken for the complete oscillation, that is known as a time period, that equal to your 6 seconds. So find their kinetic energy and your potential energy and your total energy. So how we can find their these terms? Now on this one factor beta, first we will find their velocity and here these terms are given. Then how we can find their time period? Then omega we can find. First we will find their omega equal to 2 pi by time period. Okay, so 2 pi by our 6 second is there, then here solve this one, then here pi by 3 radian per second. This one came. Okay, so velocity we can find there by using this one. Velocity is this one, omega is this one. Then by this one factor we can write their kinetic energy. Kinetic energy will be there half mv square.
हाफ एम वी स्क्वायर बेटा ये आया कहाँ से है, हाफ एम वी स्क्वायर से आया, जहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट की, इसको सोल्व किया। बट हमारे पास क्या डायरेक्ट v गिवन है, डायरेक्ट v गिवन है, तो हम डायरेक्ट v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/2 m is 10 given and v is equal to your 6 given, then 6 into 6, then it will be 36, then here solve this one, then here will come 5 6 up 30, then 3 will be there, then 15 16 17 18, then it will be your 180 joule will be kinetic energy. I hope you understood beta. 180 will be kinetic energy. Then total energy, why displacement is not given, for this one displacement is not given beta, but we can find their total energy. Total energy your m omega square a square, omega हमने find कर चुके हैं, तो यहाँ से total energy हम find कर लेंगे. Total energy we can write there, total energy equal to 1/2 m omega square a square. This one na m omega square a square. So using this one factor m omega square a square, then put these terms, then 1/2 mass क्या given अपने क्वेश्चन में 10 kg, ओमेगा इज इक्वल टू pi/3, और एम्पलीट्यूड क्या given है, amplitude of this one starting from the mean position, then your kinetic energy this one, then right here this one 1/2 10 kg, and here will be your pi/3 square, then into your, then 10 kg is executing velocity is this one, then after the 1/3 starting from the mean position, time period क्या हो रहा है आपका 6 सेकेंड हो रहा है, find its your kinetic energy. Okay, time period is not given, so we have to find out this one time period beta at the maximum velocity. So velocity we can write there, maximum velocity we can write there, v equal to your omega a. Okay, velocity we can write there omega a. So by using this one, then we can write there a equal to your v by omega. So if we are assuming this one maximum velocity, so we can write there 6 by pi by into your 3, then it will be 18 by pi, then amplitude we can find there this one your meter. So 18 by pi, this one we are find amplitude 18 by pi square. Clear? या तो क्वेश्चन एम्पलीट्यूड गिवन होगा और गिवन नहीं है, then we can find there, assume there this one is a maximum condition of the velocity on this one. So solve this one, then total energy will be there, then here will come cancel out, then 5 will be left, then it will be square of pi cancel out, then here 18 into your 18 and 3 3 ja 9. Okay, then 2 will become, then 10 into your 180 18 sorry 18, then it will be 180 joule. टोटल एनर्जी भी हमारे पास क्या आ गई 180 जूल. तो पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट देयर टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो योर पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट देयर टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल एनर्जी और 180, काइनेटिक ऑल्सो 180. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी हमारी 0. I hope you understood beta how you can find this one. First we should know about their equation of their displacement, velocity and acceleration energy, then only we can find these question. So next here a body is executing SHM according to this one equation is given, then at the time t equal to 1.5 second, then find their displacement. आपको क्या find करना, displacement find करनी, velocity find करनी है आपको, the acceleration of the body you have to find out. So displacement equation is this only given, x equal to 5 cos 2 pi t plus pi by 4. This one क्या given आपको, displacement equation ही given है. इसको solve करेंगे, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा 1.5 cos 2 pi into your 1.5. So here we can write there 15
by your 10. So solve this one, then 5 plus your pi by 4. Then here will become 5 cos 3 पाई प्लस ईयर पाई बाई 4. हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया. ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 कोस, देन हियर वी कैन राइट देयर then take this one pi common, so here left 3 plus 1 by 4. Now here we can write there, take LCM of this one. After the LCM, then here we can write there 4, then 12 plus here 1. So here we left here 5 cos 13 by 4 pi. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी. उसके बाद कह रहा है फाइंड देयर वेलोसिटी. अब वेलोसिटी हमें फाइंड करें तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, अगेन योर dx by dt. इस गिवन इक्वेशन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी. सो कोस के फॉर्म में गिवन, हमें क्या गिवन है, कोस के फॉर्म में इक्वेशन गिवन है. सो इन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस कोस, देन माइनस ए ओमेगा कोस ओमेगा. कोस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन के बाद, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन आएगा. सो हियर विल बिकम योर साइन ओमेगा टी प्लस योर 5. इफ फेज डिफरेंस इज गिवन, ये हमारे पास पाई बाई 4 क्या गिवन है, फेज डिफरेंस गिवन है. इफ दिस वन इज गिवन देन हियर राइट योर 5, इफ नॉट गिवन देन वी विल राइट देयर leave it. Okay, so here given, that's why we will write there pi by 4, otherwise we will leave it. Then velocity equal to minus a, amplitude is given in our question 5 only. Then omega को solve किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 pi. So omega equal to 3 pi sin 3 pi t equal to your 1.5 plus your pi by 4. pi क्या given आपको, pi by 4. Now here will become minus 15 pi your sin. Now here will become where 4.5 pi plus your pi by 4. क्लियर. तो सोल्व करेंगे हमारे पास कैसे आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी. उसके बाद क्या हमने ऐसे एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना. एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा. अब एक्सेलरेशन हमें पता क्या होता है, माइनस ओमेगा वाई. ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय दिस वन आवर एक्सेलरेशन. सो हियर माइनस ओमेगा हमने फाइंड किया था, कितना आ रहा है, 3 pi. Then here we will write there 3 pi square and y equal to this one. Y is where, this one our displacement only. So write here equation of the displacement 5 pi, 5 not pi, here cos is there, cos this one your cos 2 pi t plus your pi by 4. This one पुट वैल्यू ऑफ दिस वन बेटा t is given आपको 1.5. पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी. दिस वन योर मीटर पर सेकंड एंड इट विल बी योर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सोल्व दिस वन कंप्लीट इक्वेशन, देन कमेंट योर आंसर, what answer will be there. Then you have to solve only calculation only. Okay, so next one beta, this one mass of 1 kg is executing SHM, then according to this equation, ये equation given, इसके according आपको क्या find करना है, maximum kinetic energy find करनी है. So maximum kinetic energy how we can find, first we will see their kinetic energy. Kinetic energy हमारे पास क्या होती है, 1/2 m omega square a square minus y square. ओके, इस फैक्टर को बोलते हैं बेटा k. ओके, ओमेगा स्क्वायर k इक्वल टू योर m ओमेगा स्क्वायर. लर्न दिस वन फैक्टर इज योर k, वेव कांस्टेंट. सो a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती कहाँ है, फर्स्ट वी आर सी देयर SHM, simple harmonic motion, we will see starting from the mean position, then it will reach from here. Displacement यहाँ पे क्या होती है, on mean position displacement will be equal to 0. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होती है. तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एज इट विल रीच ऑन द एक्सट्रीम पोजीशन. जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, आपकी मैक्सिमम हो जाएगी. और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, इट विल बी इक्वल टू
amplitude. Okay, so on this one velocity becomes your, on this one maximum point के ऊपर क्या होती है, velocity भी क्या रहती है, maximum रहती है. On this one point velocity will be maximum, here velocity will be becomes your minimum, और minimum का meaning क्या है, जीरो. कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे थ्रो करते हैं, देन एज इट विल रीच द मैक्सिमम हाइट, देन वेलोसिटी बिकम्स जीरो. एज वेलोसिटी बिकम्स जीरो, देन इट विल बिकम अगेन ऑन द ग्राउंड सरफेस. तो जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद क्या हो जाएगी, वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जीरो बोल रहे हैं. ओके, so here as this one, on this one kinetic energy if we are writing there, then we can write there mv स्क्वायर. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर जीरो होती तो काइनेटिक भी क्या हो जाएगी हमारी, मिनिमम जीरो. ओके, कहाँ मिनिमम हो रही है हमारी, एक्सट्रीम पोजीशन पे. हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ तो क्या है, मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है. मैक्सिमम हाउ मच इज देयर, ओमेगा ए. दिस वन आवर y becomes here 0, so here left here omega a. तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो इस एनर्जी के ऊपर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी. और मैक्सिमम मींस, सो फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ हुई हमारी, मीन पोजीशन के ऊपर, और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, जीरो होती है. ओके, डिस्प्लेसमेंट विल बी बिकम्स जीरो. जैसे जैसे मीन से इधर की तरफ जाते जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी हेल्ड देयर, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वी कैन से एम्पलीट्यूड. ओके, so as we are putting y equal to 0 in this one relation, so kinetic energy will be left here 1/2 m omega square a square. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगी, ये बचेगी. तो हमारे पास y पुट करने के बाद here relation y equal to 0, so here left here m omega square y square. काइनेटिक ये रही. So here put value of this term as we will compare this one factor with your general equation. अब हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, x equal to a cos omega t plus your pi by 4. Okay, compare this one equation with this one equation. As we will compare this one, then a we can write there. A क्या आ जाएगा after comparison? A will be there after comparison. This one 6, and here this one amplitude. So amplitude will be given 6 centimeter. Here centimeter given, that's why here centimeter. Cos, then here will be omega. Then here also here this one factor will be equal to your omega only. So omega we can write there 100. ओके, यूनिट ऑफ द ओमेगा रेडियन पर सेकेंड. क्या यूनिट होती है, रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4. ओके, पाई बाई 4 क्या हमारा फेज डिफरेंस है, देयर नो नीड ऑफ दिस वन काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी से कोई नीड नहीं है, दिस वन यार पाई बाई 4 ओनली. सो हियर मास इज गिवन ऑलरेडी 1 kg. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2 मास इज इक्वल टू योर 1 kg ओनली. देन ओमेगा स्क्वायर, दिस वन ओमेगा स्क्वायर योर 100 का होल स्क्वायर into your a is equal to your 36. 6 into 6 36. So here left your 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 18 बचेगा. काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 into 100 into your 18. This one hour. I hope you understood beta how we can find this one. Then here like this one we can find, here mass is given beta 1 kg, that's why convert this one in 0.6 in meter, convert this one into meter. Okay, then solve this one. Then here also it will be 0.0 something like this one. Then 2 0 will be cancel out. Then here kinetic energy will be there. Kinetic energy will be 1800 joule in your SI unit. I hope you understood beta how we can find their maximum energy. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है आपकी, मीन पोजीशन पे. पीक पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है. इस पॉइंट पे क्या होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, और इस पे पॉइंट पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होती है, मिनिमम, और मिनिमम का मीनिंग क्या है, जीरो. Okay, I hope you understood beta. Thank you for watching today our video. In next class we will discuss in our next topic.